everyone, this is Shubhya and welcome to Yourpedia. So today again we are going to solve one more exercise of sentence equivalence, and this is going to be exercise number 40 from your favorite book, that is Manhattan, right? So here I'll just provide you with the essential tricks which are very important to solve sentence equivalence. Now let's study the statement first, like what the statement is about. In a place rife with both poverty and crime. I told you whenever there's a comma, you need to pause over there. First understand the first part and then we'll move to the next, right? So in a place rife, that is in a place that is very widespread, a general place if you say, right? A general place where both poverty and crime exist. Like suppose in a country like India also, we find that poverty and crime at its peak, right? So some caution the young student that, now we are often cautioned, what we are cautioned कि इतना ज़्यादा poverty है यहाँ पे, इतना ज़्यादा crime rate है यहाँ पे, तो you should not be wearing gold and someone would snatch your chains, or someone like the crime can be committed any time, so you need to be careful about it, right? So same way they are trying to say is, some caution the young student that to dash about with his fancy phone. Now the person, he had a fancy phone and designer clothing was only to invite trouble. Now someone, he saw a person with a fancy phone and wearing very branded, and it looked like the person is quite rich and he's having, maybe he has good money. So now what the statement comes to your mind is, from the idea that is that the person might be moving, right? He might be rushing, he might be roaming around. Obviously, if he is able to see that person, he was roaming from one place to another. Obviously, so if you see me from one place to another, that means you get an idea. Okay, she has gotten this kind of a phone, she's wearing such clothes, so that means she might have got good amount of money, and that means the person can be in trouble anytime, because we are just roaming and any could come and be at, you can say, snatch your purse or snatch your any like gold chain or something like that. So that is just in a general idea. Now the sentence or the blank requires us something where a person roams. Now we again have got 6 options where 2 are the synonyms, and it is very easy to solve this GRE portion with the elimination method. So let's go to the first point, that is sprint. What do you mean by sprint? Sprint is when we are moving, like it is racing, we are just running, okay? So if I am able to complete a short distance by running, so it is, you can simply call it running. Next is your gallivant. Gallivant means like if I am just moving from one place to another and I'm in a state of pleasure, like might be I'm listening to some songs and I'm just roaming from one place to another in a state of like enjoyment. So that is going from one place to another. Okay, so this is your gallivant. Next is your tergiversate. So tergiversate is like some kind of, you can say, if I am changing one's loyalties, beliefs, attitudes with respect to someone, or I'm trying to make, you know, like I'm making some kind of a conflicting statements. So that is, I'm trying to make some conflicting statements, I'm getting to challenge someone's belief, like someone has got an idea and I'm trying to make fun of that person, so that can be called as tergiversate. So it is tergiversate. Tergiversate, that is, I am trying to mock that person, or I'm trying to in terms of like I'm just trying to arise a conflict कि मैं जानबूझ के कोई लड़ाई पैदा करना चाहती हूँ, तो that is termed as tergiversate. Next is your traps, and traps is actually like you are walking from one place to another reluctantly. So if it is also walking, and it can be walking slowly, you can call it like that, कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, मैं बहुत आराम से जा रही हूँ कि चलो ठीक है चलना पड़ रहा है, तो that is termed as traps. डाइग्रेस करना क्या होता है? डाइग्रेस करना होता है कि जैसे मैं कोई और बात कर रही हूँ, अभी मैं आपको जीआरई पढ़ा रही हूँ एंड ऑन स्पॉट आई जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग, अच्छा कोई बात बताते हैं, चलो फिल्म स्टार्स पे बात करते हैं, तो व्हाट आई डिड इज आई जस्ट डाइवर्टेड, आई डाइग्रेस्ड, सो आई ट्राई टू चेंज द टॉपिक, so that is to digress. And the last is to equivocate. And what do you mean by equivocate? That is when I am trying to use ambiguous language to, you can say, conceal the truth. So if it is
I don't want to speak the truth and I am using double meaning statement कि आपको सच्चाई का पता ना चले. Manipulate करना. So that can be called as manipulate, or I'm trying to conceal, मतलब सच को छुपाने की कोशिश करती हूँ किसी तरह से. तो that is termed as equivocate. Now I told you the statement demanded कि कोई person है एक जनरली कि young student है जिसके पास बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, राइफ है या इस तरह से है, तो what it is that the person should be he should be like roaming, like some caution that person that you should be roam मत करो इतने सारे महंगे फोन के साथ या फिर कोई भी आप क्लोथिंग के साथ आपको ट्रबल होगी. तो इट इज लाइक रोमिंग अराउंड. अब बताओ इसमें कोई सच छुपाने वाली बात है? नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस गेट्स कैंसल्ड. इसमें कोई टॉपिक चेंज की बात है? नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड. ठीक है. इसमें कोई कंफ्लिक्टिंग लड़ाई पैदा करने वाली बात है? वो भी नहीं है, दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड. तो इसमें एलिमिनेट करना बहुत ईजी है. अब हमें नहीं पड़ा वो भाग के जा रहा था. वी हैव अ जनरल आइडिया. रोमिंग का मतलब होता है धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो इसमें स्प्रिंट इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज वी डोंट हैव एन आइडिया कि वो भाग के जा रहा था या वो सिंपली ही वाज वॉकिंग. So we get an idea like he was just roaming, so that is Gallivant or it is traps. So these two are the answers. Let's get to, you can say simply what is the explanation given. It is Gallivant and traps. You need two words that means to walk around in a showing off sort of way. अगर मैं जा रही हूँ दिखावा कर रही हूँ तो that is termed as traps and Gallivant. Both indicate the type of carefree walking. मतलब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपने enjoyment के लिए चल रही हूँ. स्प्रिंट इज अ ट्रैप आंसर. क्यों? क्योंकि वो आपको एक तरह का फंसाने की कोशिश कर रहा है. दैट यू डोंट हैव अ सेंस कि कोई हमें इससे पता नहीं चलता कि बच्चा भाग के जा रहा था या ही वाज जस्ट वॉकिंग इन अ नॉर्मल वे. तो दैट इज टर्म्ड एज स्प्रिंट, इसलिए यूज नहीं होगा. सेम वे दीज टू वर द ऑप्शंस. नाउ लेट्स गेट द वोकैब ऑफ दीज. सो फर्स्ट इज लाइक सिनोनिम्स लाइक डाइग्रेस. डाइग्रेस मैंने बोला कि एक टॉपिक पे नहीं कुछ और डिस्कशन स्टार्ट कर देना, टॉपिक को घुमाना, चेंज करने की कोशिश करना इज टर्म्ड एज डाइग्रेस. नेक्स्ट इज योर स्प्रिंट, मतलब बहुत छोटे एरिया को बहुत भाग के कवर करना. सो दैट इज अबाउट 50 feet फ्रॉम द फिनिश लाइन. गेल विल प्रोबेबली स्प्रिंट एंड सोर पास द अदर रनर्स, की मतलब इतने एरिया में वो भाग के जाएगा. स्प्रिंट करना मतलब तेजी से दौड़ के डिस्टेंस को कवर कर लेना. नेक्स्ट इज इक्विविकेट, मीन टू से सच ना बोलना, राइट. सो टू रिसीव और मिसलीड समवन यूजिंग अनक्लियर लैंग्वेज. मतलब आप क्या करते हो, फ्लिप फ्लॉप, कि ना आप सच बोलते हो ना उस टॉपिक के बारे में बात करते हो, आप कुछ और ही आंसर निकालने की कोशिश करते हो. दैट इज इक्विवोकेट. नेक्स्ट इज योर टर्जिवर्सेट. सो टर्जिवर्सेट एज आई टोल्ड यू दैट इज अ सिमिलर इन मीनिंग कि आप कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स, किसी की लॉयल्टीज को चैलेंज करते हो, किसी को आप अपोज या डिफेक्ट करते हो. दैट इज टर्म्ड एज टर्जिवर्सेट. ट्रैप्स इज लाइक सेम वे, आप वॉक कर रहे हो सिर्फ फॉर पर्पसलेस वॉक, कोई मतलब नहीं है, वैसे ही हम चलो टहलने आए हैं, रोम कर रहे हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज ट्रैप्स, राइट. स्ट्रॉल करना, पेस करना, वॉन्डर करना. गैलिवेंट है लाइक आप एक्साइटमेंट, सेम चीज है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो जस्ट फॉर फन, फॉर ट्रैवलिंग, और यू कैन से फॉर एक्साइटमेंट. Traps is like cruise, roam, you're just doing it for the enjoyment. Someone who is gallivanting around the city is looking for some means of entertainment and nothing else. जब हम घूमने जाते हैं, travel करते हैं, तो gallivant is a kind of word you can use. That was all. So here it was just a general idea how to solve it out. Vocabulary must है, वो आप अपने नोट्स बनाते जाओ और आइडिया लो. जैसे ही कॉमा आए, हाउ टू पॉज इट आउट, हाउ टू अंडरस्टैंड इट, कि अच्छा पीछे का मीनिंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. इट इज लाइक ही इज हैविंग अ फोन एंड इट्स द क्राइम रेट, तो ऑब्वियसली द पर्सन वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड. अब उसमें उन्होंने स्प्रिंट आपको यूज करने की कोशिश की जस्ट टू हैव अ कंफ्यूजन काइंड ऑफ, यू कैन से आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो these are things you need to keep in your mind before solving the question. So that was all, and I'll be coming forward with lots of other sentence equivalents one-on-one exercise. Take care, have a nice day, and keep learning, keep preparing.